Hello and welcome to Cafe Mutual. So, when we talk about investment, the first golden rule of investment is successful investing is about managing the risks, not about avoiding it. And when we talk about risks, asset allocation or the managing risk, asset allocation cannot be kept out of the conversation. Like we all understand that asset allocation is one tool which helps us in safeguarding the risks and managing them well. And when we talk about asset allocation, so asset allocation in basic terms is a strategy which divides one's investment among various asset classes, which may include like equity, bond, and cash. And we deploy this allocation strategy to balance risk and reward according to our risk appetite and financial goals and the time horizon. Why are we talking about it? As we have moved past the first quarter of this century, 21st century, a realization is running home, which says that we are living in a world which is marked by geopolitical risks and sharp and rapid market cycles and trade wars among major economies, which because we are moving in a multipolar world. And all of this in turn, all this uncertainty and volatility in turn makes asset allocation more important than ever in current situations. And seeing the upside down situation across the markets, whether we talk about domestic markets or global markets. One can argue that asset allocation is no longer a traditional thing to talk about. Like it has been evolving, and now it's time that we should think about it more aggressively or more logically. So in today's webinar, the title is Asset Allocation in an Uncertain World. So we will explore how the asset allocation framework is evolving and why does it matter in today's global and domestic context. We are joined by Prasanna Pathak, who is Deputy CEO of the Wealth Company, which is one of the newest fund house in the industry. Prasanna has more than 2 decades of experience in the industry, and given his background, we can say that he is a equity expert. So, welcome Prasanna to this webinar with Cafe Mutual. Thank you, Abhinav. Yeah. So I'll go forward with the first question. So first of Yeah. all, tell me like what does asset allocation means for an investor? What do you think about it? Yeah. So I think I'll start by saying that I think see I'm a student of cycles and I've studied cycle for the last 20 years. So what I would say is cycles is a law of nature, right? Everything that we can imagine ultimately is cyclical, right? तो Yes. सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, and वापस सुबह होती है, right? So it is a Hmm. law of nature. I mean, everything has to go through cycles, right? So Hmm. similarly, asset also all the assets which are there, they also go through cycles. All assets are cyclical, basically. Yes. Yes. एंड therefore it becomes important. ऐसा नहीं होगा कि सारे एसेट्स एक साथ चले, हो सकता है कभी सारे एसेट्स एक साथ चले, बट सारे एसेट्स का अलग अलग टाइम होता है, राइट? Yeah. एंड Yeah. therefore at its core, asset allocation is simply deciding how much to invest across different asset classes, which is equity, debt, gold, and sometimes even cash, based on the risk appetite, time horizon, and the market conditions. Market condition is Hmm. कि कौन सा asset का cycle अभी चल रहा है. तो जस्ट Hmm. गिव यू एन एनालॉजी, तो मैं क्रिकेट का दो एनालॉजीज में दूंगा. आई थिंक द फर्स्ट एनालॉजी इज, सी आई मीन व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट, राइट? तो आप सिर्फ Hmm. बैट्समैन लेके नहीं चलोगे, राइट? सो विल हैव अ Yes. कॉम्बिनेशन ऑफ गुड बैट्समैन, विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलर्स, फील्डर्स एंड विकेट कीपर एज वेल, राइट? सो दैट इज Hmm. व्हाट एन एसेट एलोकेशन इज, कि आप अलग अलग एसेट्स को अपना एलोकेशन देते हो, ठीक है? एंड सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन द पिच, आप डिसाइड करोगे कि ओपनर कौन रहेगा, स्पिन बॉलर्स आपको रखना है कि फास्ट बॉलर्स रखना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट इज Hmm. द बेसिकली साइकिल्स विच डिसाइड कि कौन सा एसेट का क्या एलोकेशन होना चाहिए. सिमिलर, so that is Hmm. what the thing is. You need to have the right mix, right? So similarly, I Hmm. mean, it's similar to the analogy of cricket. So similarly, portfolios built only on equity, for example, may do well in bull market, but Hmm. may struggle during drawdowns, right? Therefore, asset allocation ensures that risk is spread
ठीक है, volatility is properly managed and returns are Yes. more consistent over cycles. So Hmm. there's a data which support this, which says multiple global studies show that over almost 85 to 90% of the long-term portfolio returns are driven by asset allocation and not by individual security selection, and that is where Hmm. the importance of asset allocation is. Yes. Okay, that's a very important point. So I'll go with your cricket analogy. So like you said that it's like a cricket match. And when I think about it, I feel like okay, you are right. And a portfolio is like a whole cricket team that we are making to win a match or to win a tournament. You know? So tell me why is it important and relevant in these uncertain geopolitical conditions? Because we actually don't know. हमें नहीं पता है कि जैसे ट्रम्प जब से आया है, so he is doing all these things. He is announcing something today, announcing something tomorrow, else something else. Yeah, and so can I say like if the whole portfolio is a cricket team, can I say hybrid funds are all-rounder players? And I also want to know like. How do hybrid funds make sense in these uncertain geopolitical conditions? What are your thoughts on that? Yeah, I think so. That's a right analogy that you've given. So hybrid funds, in a sense, are like an all-rounder and Hmm. evergreen funds in that sense, right? So, I mean, again, a very important point. I mean, why asset allocation is more relevant during these times is, like I told you, right? So I'm a student of cycles, and what I've seen now is basically cycles are getting shorter and shorter. So when I'm saying Hmm. cycles are getting shorter, what I'm also implying is that volatility is on the rise, right? And Hmm. my study says that this situation is going to prevail over the next at least 5 to 6 years, right? And Okay. I mean, if you compare it with the ground level, right? आप ground level पे भी देखोगे तो there is a tectonic power shift which is going on globally, right? तो जहाँ पे I Hmm. think we all know the geopolitical uncertainty. There is a one nation who is in power, and there are various now bigger players who have come against those things. So this power shift, whenever it happens, generally it is at a scale of, I mean, we have seen it after almost 75, 80 years of domination. This power shift is now happening. So this is a very decadal or maybe a once in a century kind of a stuff that we are going through right now. And Hmm. such power shift generally don't happen in a year or two. So it takes, it is a process, right? तो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन भी यही बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 5-6 साल तक आपको ये अनसर्टनिटी और ये सब पूरा स्ट्रगल चलता रहेगा. एंड देयरफॉर Hmm. व्हाट द बेसिकली जो अपना साइकिल स्टडी एंड ये दोनों मैच करता है, which is what in a way saying that volatility can be on the higher side, at least for the next 5 to 6 years. And therefore, during these volatile times, I think asset allocation becomes more and more relevant, right? And Hmm. so that is what. And the second important thing is events. आज के दिन जो events होते हैं ना, they कभी local नहीं रहते, वो instantly transmit भी हो जाते हैं, right? And that is one of the Yes. reason why volatility is on the higher side. So in Hmm. such times, basically equity basically provide us with growth, but equity can be volatile, right? So that is the first thing. Yes. Debt provides stability, but limited returns होता है. ठीक है. Gold acts as an insurance during the stress periods. ठीक है. So therefore, hybrid funds, especially balance advantage funds, आपको क्या करता है? Automatically आपका asset allocation manage करता है. They dynamically adjust basically equity, debt and gold exposure based on sorry, बैलेंस एडवांटेज है तो बेसिकली डेट एंड इक्विटी का आपको वैल्यूएशंस के बेसिस पे एंड मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे Hmm. आपका वो ऑटोमेटिकली मैनेज करता है. एंड इट आल्सो हेल्प्स यू टू रिमूव इमोशंस बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग में. कभी अगर यूफोरिया होता है तो आपको बेसिकली फोमो हो जाता है, राइट? एंड इन 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 बैड टाइम्स आप बेसिकली गलत टाइम पे बेच भी देते हो. तो इमोशंस Hmm. भी आपको ये रिमूव करने में हेल्प करता है. एंड व्हाट इट बेसिकली brings on the table is discipline, which is invaluable, right? आपको डिसिप्लिन लेके आता है आपके इन्वेस्टमेंट में. एंड therefore balance advantage fund is something that I believe is one of the must have funds in your portfolio. तो इसमें बैलेंस एडवांटेज में दो चीजें हैं. तो व्हाट डज बैलेंस एडवांटेज? दो वर्ड्स है, राइट? बैलेंस एंड एडवांटेज, राइट? तो बैलेंस Hmm. क्या होता है? बैलेंस इज बेसिकली यू आर बैलेंसिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेट. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट. एंड व्हाट इज द एडवांटेज? आप बेसिकली एडवांटेज में ये है कि इट gives you the upsides of equity. It tries to capture the upside of equity, but with a much lower volatility. तो ये आपको Hmm. basically volatility कम करता है. And the third Hmm. advantage that it has is basically आपको tax advantage मिलता है, because
थ्रू आर्बिट्राज वो हमेशा 65% इक्विटी एंड आर्बिट्राज का प्रोपोर्शन रखता है, तो आपको बेसिकली टैक्स एडवांटेज भी मिलता है। एंड देखो बैलेंस एडवांटेज इज अ वेरी गुड कैटेगरी टू हैव, स्पेशली ड्यूरिंग दिस अनसर्टन टाइम्स। Okay. So it's a fair point that it's a good fund to have in these uncertain times. But मैं past few months के कुछ डेटा देख रहा था इनफ्लोज के, और पिछले कुछ मंथ्स में लाइक investors are preferring multi-asset funds. So यस। multi-asset allocation, the inflows in multi-asset allocation in past 4 5 months, it has been increasing while the inflows in balance advantage funds, which was higher past few months, now it is coming down. So what do you think about that trend? Why is that happening? What are the investors thinking? Barabar. So I think one of the reasons why the flows to the multi-asset allocation funds have increased is because the rally that we are seeing in gold and silver. ठीक है, Hmm. गोल्ड एंड सिल्वर स्पेशली इन द लास्ट 1.5 years काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है। एंड जैसा होता है कि इन्वेस्टर्स जनरली ट्राई टू चेस परफॉर्मेंस, राइट? तो जहां पे परफॉर्मेंस अच्छा है वहां पे इन्वेस्टर्स जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट दीज टू फंड्स, आई मीन दोनों फंड का द बेसिक लॉजिक इज टू रिड्यूस वोलेटिलिटी, ठीक है। दोनों Hmm. फंड को वोलेटिलिटी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मल्टी एसेट जो है फंड, मल्टी एसेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली हैविंग थ्री एसेट क्लासेस विथ लोअर कोरिलेशन, ठीक है। तो ये Hmm. बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द कोरिलेशन ऑफ थ्री एसेट क्लासेस विच इज इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, ठीक है। तो Hmm. आपको मल्टी एसेट वोलेटिलिटी रिड्यूस करता है बाय डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो आप बेसिकली डाइवर्सिफाई कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट्स इनटू थ्री एसेट क्लासेस मिनिमम, Yes. एंड देयरफॉर आपका वो वोलेटिलिटी कम करता है। कमिंग टू द बैलेंस एडवांटेज, क्या करता है बैलेंस एडवांटेज? बेसिकली आपको इक्विटी में ही डायनेमिकली इक्विटी का अलोकेशन चेंज करता है, ठीक है। एंड Hmm. whenever the valuations are high or when there is markets are very high and when there is euphoria, तो वो विद इन इक्विटी एंड डेट में ही वो अपना अलोकेशन चेंज करता है। सो बैलेंस एडवांटेज इज मोर बेसिकली इट गिव्स यू डाइवर्सिफिकेशन एंड हेल्प्स यू टू मैनेज रिस्क विद इन इक्विटी इटसेल्फ, ठीक है। सो ये Hmm. दोनों दोनों का पर्पस अलग अलग है। मल्टी एसेट इज थ्रू डाइवर्सिफिकेशन इनटू वेरियस एसेट क्लासेस, एंड बैलेंस एडवांटेज इज विद इन इक्विटी इटसेल्फ, का वोलेटिलिटी कम करता है थ्रू वैल्यूएशंस एंड बेसिकली आपका ड्रॉ डाउन कम करने में हेल्प करता है। सो इन माय व्यू, आई मीन दिस इज नॉट अ कंपटीशन बट दिस इज इट्स एन इवोल्यूशन। बोथ द कैटेगरीज सर्व डिफरेंट इन्वेस्टर नीड्स एंड द रियल अपॉर्चुनिटी लाइज इन पोजिशनिंग देम करेक्टली, राइट? So, Hmm. so I think my belief is during volatile times, especially for the next 5 to 6 years, ठीक है, both funds must have in your portfolio. तो व्हाट Hmm. परसेंटेज डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट, या तो फिर अगर कोई एडवाइजर है तो ही हैज टू डिसाइड बेस्ड ऑन वो इन्वेस्टर का क्या एपेटाइट है, क्या गोल्स है एंड क्या इनकम लेवल्स है, तो उसके ऊपर बेसिकली वो डिसाइड करना चाहिए कि कितना। बट ये दोनों फंड्स आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए, दोनों का पर्पस अलग अलग है। फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक 25% आपके पास मल्टी एसेट होना चाहिए, 25% बैलेंस एडवांटेज होना चाहिए एंड बाकी का 50% अदर इक्विटी फंड्स होना चाहिए फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर। बट किसी का अगर रिस्क Hmm. एपेटाइट हायर है तो देन मे बी ही कैन हैव अ हायर इक्विटी एक्सपोजर। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव, No, okay. Fair enough. especially in the given situation wherein we are seeing a heightened volatility and we, Hmm. we expect the volatility to be higher over the next 4 to 5 years. Okay. So basically, you are saying that you should have two all-rounder players in your team, one who is Absolutely. tilted towards batting side and one another who is tilted towards bowling side. Bowling set. Yeah. या बट दोनों का काम वही है, आई मीन बोथ ऑलराउंडर्स एंड दोनों आपको वोलेटिलिटी कम करने में हेल्प करता है। Hmm. Okay. That's an interesting thing. And so coming forward to the next question, so like major of our audience is mutual fund distributors, and basically they advise their clients to have to create their portfolios according to their time horizon and risk appetite and other things. So tell me, how should the MFDs look at balance advantage funds? Like it should be a defensive thing. They should look at it as a defensive, tactical, or core allocation. So I think, I mean, given the situation that we are into currently, I think balance advantage should be definitely in the core allocation. ठीक है? Hmm. Because I think the reason is it helps you to meaningfully participate in the equity up cycles. That is one. It helps you Hmm. protecting capital during down cycles. That's the second thing.
एंड इट रिड्यूसेस बिहेवियरल मिस्टेक्स लाइक पैनिक सेलिंग एंड ओवर एक्सुबरेंस जो है ना वो आपको मिस्टेक्स हेल्प रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। Yes. तो अभी जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे कि करंट इसमें वैल्यूएशंस आर नॉट चीप, वोलेटिलिटी स्ट्रक्चरल। तो बैफ बेसिकली एक्ट्स एज अ शॉक ऑब्जर्वर, तो शॉक ऑब्जर्वर की तरह वो काम करता है। एंड दे Hmm. आर नॉट जस्ट टैक्टिकल और डिफेंसिव टूल्स नहीं है। आई थिंक दिस इज बेसिकली एन ऑल विद अ फंड। So in that sense, I think it is a core thing which you should have. एंड आपका बेसिकली इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस आप इंप्रूव कर सकते हो थ्रू एन बैलेंस एडवांटेज फंड। सो नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस टाइम, आई थिंक अक्रॉस दिस इज सो इन सेंस दिस इज एन एवरग्रीन फंड। तो Hmm. बेसिकली इन्वेस्टर का साइकोलॉजी होता है कि वो गलत टाइम पे आते हैं, गलत टाइम पे जाते हैं, एंड दे आर ऑल Yeah. हैविंग इमोशनल बायसेस आल्सो। तो दिस फंड इज समथिंग व्हिच हेल्प्स यू टू रिड्यूस वोलेटिलिटी, रिड्यूस ड्रॉडाउन एंड गिव्स द इन्वेस्टर बेटर एक्सपीरियंस। तो आपको गलत टाइम पे सेल करने में अवॉइड करते हैं आपके, क्योंकि आपको वोलेटिलिटी कम है। सो मीन दिस आर द Hmm. मेन 3 or 4 थिंग्स फॉर अ बैलेंस एडवांटेज फंड व्हिच इज देयर। ओके। सो ओके, ठीक है, ये समझ आया कि बैलेंस एडवांटेज फंड होना, स्पेशली इन दीज volatile geopolitical conditions where nothing, like we cannot be sure about anything, there's nothing that is certain. राइट। So बट uh, अदरवाइज अगर ये अनसर्टन कंडीशंस भी नहीं होती ना, तो भी बैलेंस एडवांटेज इज अ मस्ट हैव फॉर अ बेटर इन्वेस्टर एक्सपीरियंस। तो अगर बहुत किसी इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है, सो hmm, ही शुड बेसिकली एंजॉय द अपसाइकल्स ऑफ इक्विटी का जो भी इंक्रीमेंटल रिटर्न्स है, ही शुड एंजॉय थ्रू hmm, बैलेंस एडवांटेज, क्योंकि वो आपको वोलेटिलिटी कम कर देगा। तो काफी uh, सारे इन्वेस्टर्स इक्विटी से आउट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे फेस वोलेटिलिटी, राइट। तो hmm, एंड hmm, मोस्टली लोगों की गलती हो जाती है, वो गलत टाइम पे आउट हो जाते हैं, राइट। hmm. बैलेंस एडवांटेज आपको एक्सपीरियंस अच्छा देता है एंड बेसिकली आपको वोलेटिलिटी कम करे। तो आपका जो मेन प्रॉब्लम है विच इज लाइक आप गलत टाइम पे बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी निकल जाते हो मार्केट से, एंड यू डोंट अर्न द एक्चुअल रिटर्न्स विच एन इक्विटी इज सपोज टू अर्न, राइट। सो दैट इज वेयर अ बैलेंस एडवांटेज कम्स इन एंड इट गिव्स यू अ बेटर एक्सपीरियंस टू द इन्वेस्टर। So basically you are saying that you don't need to worry about timing the market when you are टाइमिंग द investing in this मार्केट fund. वोलेटिलिटी आपको अच्छे से हो जाता है। सो अगर कोई इन्वेस्टर इज अ प्रो इन्वेस्टर जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत ही अच्छा है, आई मीन ही हैज सीन साइकिल्स वगैरह, तो उसके लिए मे बी अ प्योर इक्विटी फंड इज अ बेटर थिंग। बट जिसने Hmm. ज्यादा साइकिल्स देखे नहीं है, उसका रिस्क एपेटाइट मीडियम है, आई थिंक फॉर हिम आई थिंक बैलेंस एडवांटेज फंड इज द बेस्ट फंड फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ वोलेटिलिटी पॉइंट ऑफ Hmm. Okay. So, okay. So, what should be the optimum way of investing in a balance advantage fund? SIP or lump sum? What will be better? What do you think? So I think always, I mean, both SIP and lump sum make sense for a balance advantage fund. तो ओनली रीजन अगर देखो एसआईपी करने का रीजन एक होता है कि आपको बेसिकली ठीक है मेरा इनकम ज्यादा नहीं है, तो मैं छोटे छोटे अमाउंट से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए लोग एसआईपी करते हैं, ठीक है। Hmm. लोगों के पास अगर बहुत पैसा भी है वो भी एसआईपी करते हैं बिकॉज दे आर वरीड अबाउट द वोलेटिलिटी, राइट। तो बोल रहे हैं कि ठीक है इतना वोलेटाइल है तो लेट्स एवरेज इट आउट, राइट। तो रिगार्डलेस Hmm. ऑफ द वोलेटिलिटी हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहेंगे। सो अगर आपका वोलेटिलिटी इज टेकन केयर ऑफ, अगर बैफ आपका वोलेटिलिटी स्ट्रक्चरल रिड्यूस करता है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर लमसम इन द बैलेंस। तो Hmm. एडवांटेज ऑफ बैलेंस एडवांटेज फंड्स। एंड अगर आप लमसम करोगे तो आपका ऑब्वियसली जैसे जितना टाइम आप इक्विटी में रहोगे उतना आपका रिटर्न भी बढ़ता है, राइट। तो एसआईपी तो आप Hmm. थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालोगे इक्विटी में। सो Huh. अगर आपका वोलेटिलिटी कम करके आप इसमें लमसम भी डाल सकते हो, सो दैट योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऑल्सो इंक्रीजेस एंड आप जैसे लमसम डालोगे तो आपका रिटर्न पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीज हो जाता है। Okay. So you're saying that an investor can go with any of the route, एनी ऑफ द but they should be invested in a balance दे शुड advantage बी fund. इन्वेस्टेड, हाँ। ओके। सो वेल्थ कंपनी का भी एनएफओ चल रहा है बैलेंस एडवांटेज फंड का। एंड बिल्कुल। व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि जैसे अभी जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इकोनॉमी में, ऑल द इन्वेस्टर्स मस्ट बी फेसिंग इट। सो गिवन दैट जो फंक्शनिंग है इस फंड की, द वेल्थ कंपनी बैलेंस एडवांटेज फंड, उसकी जो फंक्शनिंग है और उसकी जो कोर फिलॉसफी है, वो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की कोशिश करती है? can you throw some light on that? Yeah. So see, I think the what are the biggest challenges that investor face today? One is volatility, right? Second is the Yeah. behavioral biases, ठीक है। Yes. Difficulty in timing the market, ठीक है।
एवर आई मीन ओवर एक्सपोजर टू इक्विटी एट द रॉन्ग वैल्यूएशंस। तो ये तीन चार जो चैलेंजेस है इन्वेस्टर्स के, तो इन सारे हम्म चैलेंजेस को बेसिकली बैलेंस एडवांटेज फंड, हमारा जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो बेसिकली एड्रेस करता है। ठीक है। एंड द अदर द फ्रेमवर्क जो हमारा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज व्हाट आई वुड से इज, आई थिंक व्हाट वी स्ट्रक्चरली बिलीव इज, देखो मार्केट स्ट्रक्चर ना हर 4-5 साल में चेंज होते रहता है। ठीक है। द मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली चेंजेस एवरी 4 to 5 years। तो इसमें फॉर एग्जांपल आप देखिए निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स 10-15 साल पहले इंटायरली डिफरेंट थे और आज के कंस्टिट्यूएंट्स एकदम डिफरेंट है, राइट। एज वी मूव, हम जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होते रहता है, तो निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स भी चेंज होते रहते हैं, राइट। सो इन हम्म टर्म्स ऑफ जो जैसे भी जितने भी फंड्स बेसिकली इक्विटी एलोकेशन चेंज करते हैं, वो दो पैरामीटर्स पे चेंज करते हैं। वन इज द पीई एंड विच इज हाँ, प्राइस टू अर्निंग्स, एंड सेकंड इज द पीबी विच इज द प्राइस टू, हम्म ठीक है। हम्म तो ये दोनों ना बेसिकली 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पी डिपेंड्स ऑन 4 or 5 फैक्टर्स। वन इज द ग्रोथ, कि कितना ग्रोथ है कंपनी में। सेकंड इज द विजिबिलिटी ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। तीसरा फैक्टर है आरओई आरओसी, ठीक है। हम्म फोर्थ इज द मैक्रो कंडीशन, फिफ्थ इज द लिक्विडिटी। तो ये 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका पी एंड पीबी, राइट। बट ये हम्म पांचों फैक्टर्स ना चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं बोला ना कि इक्विटी के कंपोनेंट इटसेल्फ हैज चेंज, तो इसका आरओई आरओसी ग्रोथ विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ सब कुछ चेंज होते रहता है। So हम्म what we believe is, see market is finally supreme, but market ये सब changes जो है ना वो एक साल में डाइजेस्ट डिस्काउंट नहीं कर देता है। बट ओवर 5 to 8 years आई थिंक मार्केट एडजस्ट टू दिस चेंजेस। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यार 20 साल पुराना डेटा लेके मतलब नहीं है। सो बेबी 20 साल पहले हम 10 के पी पे ट्रेड करते थे, बट हो सकता है वहां पे हम लोग, हमारे इसमें कमोडिटी स्टॉक्स ज्यादा हुआ करते थे, इसके लिए वो 10 के पी पे। हम्म So I think for in today's thing, I think 10p is not relevant, is what we are saying. So what is more relevant is the last 5 to 8 years ka average p. So what we are using in our framework is the rolling averages of last 5 to 8 years. And that we are saying is हम्म the right P. And whenever the market is say one standard deviation, two standard deviation, three standard deviations above that rolling 5 to 8 years average P and PB range, that is where we हम्म change our equity allocation. अगर बहुत ऊपर है तो हम लोग इक्विटी एलोकेशन कम करेंगे, बहुत नीचे है तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देंगे। सो दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग मूविंग एवरेजेस, सो दैट अगर वो बैंड में है बट वो कितने टाइम रहेंगे हमको नहीं पता, राइट। तो हम लोग उसको सेकंड लेवल ऑफ उसमें गार्ड रेल डाल रहे हैं, विच इज द मूविंग एवरेजेस। And so हम्म this is something that is a very unique framework that we are having. And the other end is, जो भी हमने बहुत सारे जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, तो उसमें हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ देम, मेनी ऑफ दोज आर हमेशा लार्ज कैप ओरिएंटेड ही रहते हैं। ठीक है। तो हमारा हाँ ये बोलना है कि अगर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी बिलो हो, जो वैल्यूएशन के, देखो एक एक रूट तो हम लोग वोलेटिलिटी कम करने के लिए यूज कर रहे हैं, विच इज अगर हमारे वैल्यूएशन ज्यादा है, मार्केट में ऊपर है, तो एनीवेज हम लोग इक्विटी एक्सपोजर ही कम कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर हम्म एक्चुअली वेरी चीप, व्हेन द मार्केट इज एक्चुअली वेरी चीप एंड मिड कैप स्मॉल कैप भी काफी चीप अवेलेबल है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी बढ़ाना चाहिए। सो दैट इज द हम्म रेंज ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे वेन एवर द कंडीशंस आर देयर। सो दैट दीज आर द 2 or 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस। वन इज द पी एंड पीबी रोलिंग एवरेजेस हम लोग यूज कर रहे हैं, 5 8 years का एवरेज यूज कर रहे हैं। सेकंड इज वी आर यूजिंग द मूविंग एवरेजेस। एंड थर्ड वी आर सेइंग कि व्हेन द मार्केट्स आर वेरी चीप, वी हैव अ स्लाइटली मोर lever to use the mid cap and small cap. हम्म So these ओके are सो the three major changes which are there. And obviously, I mean, जो investor के challenges like a high volatility, behavioral biases, difficulty in timing market, over exposure to equity at the wrong valuation, तो ये सारी चीजें हम लोग ये फंड के थ्रू एनीवेज एड्रेस कर ही रहे हैं। ओके तो सो यू टॉक सो अबाउट एंटायर एम जो हमारा है ना, तो इज टू ब्रिंग प्रोसेस predictability and discipline in an unpredictable world. So this is what the TWC Balance Advantage Fund is all about. Okay, so you talked about rolling average. So, like, though it is used from the supply side in the industry, Right. but on the demand side, it is not used much rolling average. So, Right. can you explain to our audience, like, how does this rolling average, focusing on rolling average changes, like in a fund structure? What's the relevance of that? तो लाइक आई सेड ना कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो चेंज होते रहता है, राइट। इट अडेप्ट्स टू द चेंजिंग प्रोसेस, राइट। तो Hmm. एवरी एवरी 2-3 साल, अभी फॉर एग्जांपल जो अपना लिक्विडिटी था, ठीक है, एंड वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स पी इज लिक्विडिटी, राइट। तो जो Huh. अपना स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी था रिटेल पार्टिसिपेंट का, वो कोविड के पहले नहीं था, राइट। But it Yeah. was a different set of people who were dominating the market, and now it is like liquidity has become a structural thing. So ये Hmm. changes
बेसिकली आपका 5 या 8 साल के विंडो में चेंज होते रहता है, एंड वी आर यूजिंग दैट 5 to 8 years ऑफ चेंज्ड स्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग द रोलिंग एवरेजेस. हाँ, ओके ओके, दैट मेक सेंस बिकॉज जब आप रोलिंग एवरेज यूज कर रहे हो, सो यू आर इनकॉर्पोरेटिंग द चेंजेस दैट वर हैपनिंग लास्ट Yes, ईयर yes, टू yes, लास्ट ईयर, है ना? yes, yes. दैट्स द फिलॉसफी. Yeah, and this is not a 1 or 2 year ka rolling averages, right? We are using a 5 to 8 years ka rolling averages. So it is हाँ. it over a period of time, but we are not depending on the 20 saal purana data. So we are using the more relevant data, So can which I say that? So can I say that ki it like using the rolling average, you are incorporating all the changes, all the weightage of the yes, changes the structural changes that has happened in the market structure, in the market structure. which can Okay. be in the form of growth, which can be in the form of visibility of growth, which can be in the form of ROE, ROC of that particular index or components, which can be in the form of liquidity, which can be in the macro factors, right? India के macro Hmm. factors change होते रहते हैं ना, so everything Hmm. has to be accommodated for. Okay. Okay. So that moves me to the last question. So like uh, why should the investor, like why should the MFDs or the advisors recommend this scheme, and which category of the investors should be which like whom should be whom this fund should be most beneficial? What are your thoughts on that? So, I think so. The reason why anyone should recommend this particular scheme is, first of all, it is coming from the desk of the wealth company, and wealth Hmm. company का अगर I think कोई भी नए म्यूचुअल फंड में आप जा रहे हो तो बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, which is what is the people, Hmm. the people behind that particular thing, and what is the philosophy, right? So in terms of Yes. people, I think if you look at our trustee board, the AMC board, and the executive team. So trustee and AMC board pe we have all the IS and the IRS officer. I think everyone should take a look at our trustee and AMC board and the executive team. So even in the executive team, the top six log hai, I think they are minimum 25 to 30 years of experience. So one is the people who are driving this particular mutual fund. The second is the philosophy. So we have a change and age philosophy, which is a very unique philosophy. I mean, this is too much of a less time to discuss, but we have a particular unique philosophy, which is like a which is based on higher due diligences, which is based on deeper research and so on and so forth. It is based on process oriented approach and so on and so forth. So that is a very important thing. And what we believe, this particular fund is a true BAF fund, right? Because of the unique framework Yeah. that we are having. And in terms of further need from an investor point of view, I mean, it uh, does reduce volatility. I mean, that is the aim, to reduce volatility, to reduce emotions, and to reduce drawdown. So that is the goal of this particular fund. It gives a better investor experience, and this is a fund you need to have in must have in the volatile times, like we had discussed, right? So that is how. Hmm. Yes. Okay, and for the like category of investors, whom it should be beneficial, or like should be the what should be the ideal investors for this fund? Yeah, so like I'm saying, I mean, we are in extraordinary times. So we believe that volatility is going to be on the higher side. So I had already discussed, right? Ki, for a normal investor, I think 25% should be in multi-asset allocation fund, 25% should be in the balanced advantage fund, and remaining 50% can be in diversity. So I think in terms of equity investors, across all investors, but especially suited for investors who have slightly lower risk appetite, right? And Hmm. I mean, they want to basically have a better experience. So, someone coming new to the industry, someone having a lower appetite, lower risk appetite also can. But in the current times, I think it is an evergreen fund. It is across all the investors. So, just to conclude, I think basically in a world where cycles are faster and emotions are running high, I think asset allocation is not an option; it's a necessary, right? And therefore, Hmm. balance advantage funds. If it is designed well, like the unique basically framework that we are having, can offer a balance between growth and protection, and that is what this fund is all about. And it appeals across all investors, especially during the current times. Okay, so that's all the questions. So I'm opening it up for the questions from the audiences. So while we wait, can you just explain one more thing? Like, uh, given that we have 50 AMCs in the industry and seven more are lined up,
like four recently applications were submitted with SEBI, three are in line, like they have gotten the in principle approval. Now they need to set up the AMC. So we have those many funds. So when a mutual fund distributor is looking all these balance advantage funds and he want to decide like which should be better for the investor, how should they look at it? What are the parameters that they should compare our balance advantage funds on? So I already very briefly discussed that. So I think what he should look at is who are the people behind that mutual fund. So any investor or a distributor should look at who are the people behind that mutual fund. What is the Hmm. philosophy? Because every fund has a unique philosophy, right? Parak Parik has a different philosophy. Quant has a different Yes. philosophy. White Oak has a different philosophy. So ours is a very unique philosophy, which is a research-driven, due diligence-driven philosophy, right? Right. What is unique framework about this particular balance advantage funds? So these are the three Hmm. or four things which an investor or distributor should, and we believe we have a kind of a unique proposition and in this particular aspect as well. So I think Hmm. Anubhav, I think I have a hard stop, so maybe we can take one or two quick questions and we'll have to wrap it up because I have Okay. a flight to catch. So we can take one or Hmm. two very quick questions and then we'll have to wrap it up. Okay, so the one question is like given the current valuations in the market and recent trade deal announcement with USA, what kind of percentage will BAF like investor should start with? what पर कि क्या परसेंटेज होनी चाहिए उसकी और करंट व्यू इक्विटी के हिसाब से BAF like have exposure, okay, no so like that will be all like कितना परसेंट होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए क्योंकि ट्रेड डील भी हो गई है अभी और बहुत सारी चीजें हैं. बैलेंस सो एडवांटेज बोल रहे हैं, बैलेंस एडवांटेज में कितना होना चाहिए या परसेंटेज? बैलेंस एडवांटेज या परसेंटेज ऑफ So द again, पोर्टफोलियो. I mean, we have already discussed that, right? So for a normal investor, all I'm saying is because see, I mean, trade deal वगैरह होगी, that is fine, but I mean, we are in a scenario of heightened volatility for the next 4 to 5 years because the power shift which is going on is more structural and it will take. It is a process, right? It will take some time. So therefore, for a normal investor, I had indicated 25% multi-asset में होना चाहिए, 25% balance advantage में होना चाहिए, and 50% can be in other various equity funds. हम्म. दिस इज फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर. अगर किसी का रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो इसको इक्विटी प्योर इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए. अगर किसी का रिस्क एपेटाइट कम है तो दोज परसेंटेजेस कैन इंक्रीज इन फेवर ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एंड बैलेंस एडवांटेज फंड. सो दैट इज द रफ एलोकेशन दैट एनी इन्वेस्टर कैन हैव. Okay, thank you for joining this Thanks, Abhinav, webinar. and thanks everyone who has joined this call. Thanks everyone, and looking forward to your support. Yeah, thank you. Yeah. Thanks everyone. Okay, Take thank you care. everyone for attending this webinar and thank you Prasanna also. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.